સૌથી મોટો આરોપ, સૌથી મોટી વાત, સમગ્ર દેશ માટે અગત્યની વાત કહી શકાય, ગંભીર આરોપ કહી શકાય છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, સવાલો ખૂબ ગંભીર છે, પ્રહારો ખૂબ ગંભીર છે. સૌથી મોટો સવાલ એમણે કર્યો હતો કે મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 5 મહિનાની અંદર જ નમસ્કાર, આપની સાથે હું આકાંક્ષા ગોંડલિયા. તમે જોઈ રહ્યા છો રાજકોટ. ભારત આપણે જાણીએ છીએ લોકશાહીનો દેશ છે. લોકોનો મત અતિ અમૂલ્ય માનવામાં આવે છે, પણ અત્યારે સવાલો એ જ લોકોના મત પર ઉપર આવીને ઉભા રહી ગયા છે. લોકો જે મતદાન કરે છે, મતદાન ઉપર આવીને ઉઠ્યા છે, જે સરકાર છે એના ઉપર ઉઠ્યા છે, જે ચૂંટણી આયોગ છે એના ઉપર ઉભા થયા છે. રાહુલ ગાંધી અત્યારે એક રેલી આયોજિત કરી રહ્યા છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું. 1 કલાકની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું હતું એમાં તેમણે પ્રેઝન્ટેશન મારફતે અનેક આકરા સવાલો સરકાર પર કર્યા હતા. અને સૌથી ગંભીર સવાલ કે સરકાર વોટ ચોરી કરી રહી છે, વોટની જે ચોરી થઈ રહી છે. એટલે આ સવાલો કેટલા યોગ્ય છે, અયોગ્ય છે એ તો આવનારા સમયમાં જ ખબર પડશે. પણ આ જે સવાલો ઉઠ્યા છે ચૂંટણી આયોગ પર, સરકાર પર, એ ખરેખર માત્ર તેમના પર ઉઠેલા સવાલ નથી, પણ લોકશાહી, લોકતંત્ર જે દેશ છે એના પર સવાલો ઊભા થયા છે. એ જે લોકોના મત છે, હજારો મત છે, એના પર આ બધા જ સવાલો ઊભા થયા છે. જે રીતે આપણે વાત કરીએ કે જે સમગ્ર પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી, વોટર રેલી હતી, તેમાંનો એક મુખ્ય સવાલ એ હતો કે સરકાર દ્વારા જે વોટ છે તેની ચોરી કરવામાં આવી રહી છે. એક તરફું જે આ બધા જવાબો આવી રહ્યા છે, રિઝલ્ટ આવી રહ્યું છે, એક તરફા બધા આવી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ પ્રેઝન્ટેશન સાથે આંકડાઓ દર્શાવ્યા હતા, બધી જ માહિતી આંકડાઓ સાથે વાત કરી હતી. અને તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જે પણ વસ્તુ હું કહી રહ્યો છું એ બધાની સાબિતી પણ હું આપી શકીશ, પણ ક્યારે કે જ્યારે આ બધી જ વસ્તુઓ ઉપર તપાસ થશે. સવાલો ખૂબ ગંભીર છે, પ્રહારો ખૂબ ગંભીર છે. સવાલ માત્ર મેં જે રીતે કહ્યું કે સરકાર પર નથી, એ દરેક જનતાના વોટ પર આવીને ઉભો રહ્યો છે. દરેક જનતા કે જેમણે પોતાની સરકારની પસંદગી પોતે કરી છે એમના પર આવીને ઉભો થયો છે. ચૂંટણી આયોગ છે તેમના પરના સવાલો કે ચૂંટણી આયોગ છે તેને ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠ કરી છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં પણ ઘાફલાઓ સામે આવી રહ્યા છે. એટલે આમ કહીએ કે આંકડાઓ જે રીતે દર્શાવી રહ્યા છે, એટલે જે રીતે અત્યારે બધી વાત સામે આવી રહી છે એના ઉપરથી એવું કહી શકીએ કે અત્યારે તેમનો મિજાજ છે ખૂબ આંકરો દેખાઈ રહ્યો છે. એક વિપક્ષ તરીકે એમની ભૂમિકા છે ખૂબ આંકરા પદ પર અત્યારે દેખાઈ રહી છે, પણ સવાલો ખૂબ ગંભીર છે. સૌથી મોટો સવાલ એમણે કર્યો હતો કે મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 5 મહિનાની અંદર જ 1 કરોડ નવા વોટર છે તેને એડ કરવામાં આવે, 1 લાખથી વધારે વોટ છે તેની ચોરી કરવામાં આવી છે. તેની સામે ચૂંટણી આયોગની જો આપણે વાત કરીએ તો કર્ણાટક સહિત 3 રાજ્યોના ચુનાવ આયોગે છે આ બધા જ ઠરાવોને નકારી દીધા છે. તેમણે આ બધી જ બાબતોને નકારી કાઢી છે. તો તેણે સામે રાહુલ ગાંધીને એક પડકાર ફેંક્યો છે. પડકાર કંઈક એવો કે તેમના દ્વારા એક શપથપત્ર તેમને મોકલવામાં આવ્યું છે અને કહેવામાં આવ્યું કે જો તેમની પાસે બધી જ સાબિતી છે અને એવું માને છે કે જે કહે છે બધું યોગ્ય છે, સચોટ છે, તો એ જે શપથપત્ર છે તેના પર સહી કરે અથવા તો તે સમગ્ર દેશ પાસે માફી માંગે. જોકે અહીંયા એ પણ છે કે હજુ એ કોઈ બાબતે બીજા ખુલાસાઓ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં નથી આવ્યા શપથપત્રને લઈને. અત્યારે જે આખું ઇન્ડિયા ગઠબંધન છે તે પણ આમાં સામેલ નથી, માત્ર કોંગ્રેસ છે એ જ અત્યારે આ લડત લડી રહ્યું છે, સવાલો કરી રહ્યું છે. પણ આજે શપથપત્ર મોકલવામાં આવ્યું, પણ તેમ છતાં અત્યારે રાહુલ ગાંધીનો મિજાજ હજુ પણ આકરો જ છે. બેંગલુરુમાં પણ આ રેલી આયોજિત કરવામાં આવી હતી, ત્યાં ઉઠેલા સવાલો, બિહારનું જે પુનઃ નિરીક્ષણ છે તેના પર વિચાર કરવો જોઈએ તે બાબત પણ તેમણે નકારી કાઢી છે. તેને ગંભીર આરોપ તો એ મૂક્યો છે કે ગરીબ લોકોના વોટ ચોરી લેવામાં આવે છે. સૌથી મોટો આરોપ, સૌથી મોટી વાત, સમગ્ર દેશ માટે અગત્યની વાત કહી શકાય, ગંભીર આરોપ કહી શકાય એ છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વોટ ચોરી કરીને પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે, આવી વાત રાહુલ ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે એમનું નિવેદન અને એમને જે શું વાત કરી છે આ બધા જ વિડીયો સામે આવ્યા છે. કરીએ એક નજર. इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है. 6 महीने लगे. यह है चोरी. 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है. डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है. फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है. बल्क वोटर सिंगल एड्रेस,
एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत कौर डांग, सॉरी, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए, ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है, या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं, हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं, एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं, पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे,
या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट, हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए, साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में, जैसे यहां हुआ, स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधवपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी। એ સાથે પ્રિયંકા ગાંધી છે, એમણે પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે અમે શપથ લીધેલા વ્યક્તિઓ છીએ અને અમે જે પણ માહિતી આપી રહ્યા છીએ એ આ રીતે માહિતી આપી રહ્યા છીએ। પ્રિયંકા ગાંધી આ સમગ્ર બાબતે શું કહ્યું છે એના પર નજર કરીએ। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं?
तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है? नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव, और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में तो। तो एक बहुत बड़ी बात है कि 25 सीटें ऐसी जहाँ 30,000 33,000 के मार्जिन रहा है बीजेपी का। तो क्या आप चाहेंगे कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Various state election Have also various state election commissions have come out and they have said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now various How do they know it's wrong? How do they know it's wrong? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it? There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, અત્યારે સમગ્ર મુદ્દો ખૂબ ગંભીર બની ગયો છે. સમગ્ર દેશવાસીઓની નજર આ મુદ્દા પર છે કે આવનારા સમયમાં શું નિર્ણય આવે છે, શું ભૂમિકા ભજવાઈ રહી છે સમગ્ર મામલામાં. પણ ખરેખર આ મામલો ખૂબ ગંભીર છે અને જો કોઈ પણ મુદ્દો આમાં સાચો આવે છે, કોઈ પણ એક નાનકડો મુદ્દો પણ જો આમાં યોગ્ય આવે છે, તો ચૂંટણી આયોગ, કારણ કે ચૂંટણી સૌથી નિષ્પક્ષ વસ્તુ લોકો માને છે કે અત્યારે બીજું કંઈ નિષ્પક્ષ હશે કે નહીં હોય, પણ ચૂંટણી તો હર હંમેશ નિષ્પક્ષ જ હોવી જોઈએ. અને જો એના પર સવાલો ઉઠે છે ને એ સચોટ થાય છે, તો ખરેખર સમગ્ર ભારત દેશ માટે આ ગંભીર મુદ્દો ગણી શકાય. સમગ્ર મુદ્દે આપનું શું કહેવું છે કમેન્ટમાં જણાવજો. ફરી મળીશું. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.